हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय फर्स्ट चैप्टर फॉर क्लास 12 which is sexual reproduction in flowering plants. Okay, so some of you must have seen my previous videos on class 11 and some of you may be first timer class 12 students. Okay, so sexual reproduction in flowering plants, which means what? Angiosperms. Okay, so let's not waste time and start. So here this is the LS of a typical flower. इससे शुरू करते हैं. First we will revise a bit and then we will move ahead. Okay. So let's begin. This is what? This part is the sepal, right? This is the thalamus. Let's begin from here. Clear? This is the sepal. मैं इसको सेपल पेटल को दूसरे तरफ लिखती हूँ. There is a reason for that. This is the sepal and this is the petal. Okay, you know. ये क्या है? Obviously the ovary. Stigma. Sorry, style. I'm sorry. And this is the stigma. What do they make? The carpel. Clear? What is this? The anther. And this part is the filament. ये दोनों को क्या? Part of stamens. So these are what? Flower has 4 holes, right? 2 essential या accessory and 2 essential या accessory and 2 non-essential. 2 non-essential या accessory, which are what? The petal and the sepals. Accessory holes. This plus this are the essential holes. Clear? Now, first we will study a male reproductive part, then we will study the female, फिर pollination and so on. Okay? So let's do the study of a stamen. उससे पहले there is a small question for you. Please focus on this diagram, especially this part, and tell me the answer in comment section. What kind of a flower is this? Epigynous या hypogynous या perigynous? Okay. I'm going to tell you, but after some time, but please focus here and let me know the answer. So, this is what? A stamen. Stamen पे क्या है? Filament, you all know. आप सबको मालूम है. This is the filament and this is the anther. Filament attached to what? Thalamus. At which end? Distal end या proximal end? और anther जो है, it is situated at which end of the filament? Distal end or proximal end? Which one? So clear this confusion. जब भी हम distal या proximal बोलेंगे, it will always be with reference to the thalamus and not what we see or our eyes. Okay. So at proximal end, attached to thalamus. Anther at distal end. Clear? अब these are the 2 lobes of an anther. So an angiosperm anther is typically a bilobed structure. ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है. Clear?
Now we will be focusing on this part, and let's come here. Okay. So do you see this is one lobe, this is another lobe. So anther is what? Let's start. Bilobed, because it has two lobes. Now लोब के साइड पे यहाँ एक हल्का सा ग्रूव लाइक होता है, गड्ढा सा, ओके, थोड़ा सा अंदर की तरफ. यहाँ पे भी मैंने ऐसे दिखाया है. सो व्हाट इज दिस? इसको स्टोमियम बोलते हैं या लाइन ऑफ डेहिसेंस. सो अगर पूरा एंथर को हम देखें, दिस विल बी द स्ट्रक्चर, लेकिन बीच में अगर काट दे तो हाउ विल द ट्रांसवर्स सेक्शन लुक? हल्का सा ओवरव्यू यहां दिया हुआ है, एंड देन वी विल स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन, दिस स्ट्रक्चर इन डिटेल्स. ये क्या है? दिस इज ग्रूव लाइक, राइट? ये एक लोब हो गया, दिस इज वन लोब, दिस इज अनदर सेकंड लोब, and this is the filament. Now inside the lobe, each lobe, okay, this is one lobe, there is one and two chambers of sporangious tissue. So called what? Microsporangium या थीका या पोलन सेक्स. ओके, प्लीज डू नॉट बी कंफ्यूज कि ये तीनों क्या है, कब क्या है, क्या होता है. लेट मी एक्सप्लेन. नाउ पोलens आर व्हाट? द मेल रिप्रोडक्टिव, द एक्चुअल पार्ट. There are always microspores, and the tissue जिससे वो निकलने वाला है, that is the microsporangium, right? So microsporangium के अंदर क्या है? बहुत सारे से cells, which are what? Which are the mother. वही तो जाके meiosis करेंगे and they'll give rise to the spores. तो naturally microsporangium is what? The cells which are going to form the mother cells, and those mother cells will form the microspores. Clear है? Now if you see इस ट्रांसफर सेक्शन में ये एक थीका है, ये ऐसा पूरा सिलिंड्रिकल इट इज कमिंग. ये दूसरा थीका है, दे आर सेपरेटेड. लेकिन डू यू सी हियर, यहाँ सेपरेट है, बीच में टिश्यू है. हियर आल्सो इफ यू वांट टू सी, ये अंदर ऐसा लॉन्गिट्यूडनली इट हैज गॉन, ये भी अंदर इट हैज गॉन लॉन्गिट्यूडनली. क्लियर? सो ईच एंथर इज बाइलोब्ड. अब एक लोब में क्या है? देयर आर टू sacs, so thus each lobe dithecus, two sacs. Clear? अब पूरा को अगर एक साथ ले तो 1 2 3 4. Thus each anther is bilobed, tetrasporangiate. राइट? दो लोब के अंदर 4 स्पोरेंजियस टिश्यू का मास. इज दिस क्लियर? प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड. लोब इज डाइथेकस, एक लोब में दो दो थैला, और ऐसे ही दो लोब है तो व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ द एंटायर एंथर देन इट बिकम्स टेट्रास्पोरेंजिएट. Okay, please write down these two lines, and I hope I am able to clarify the confusion. Now let us see microsporangium, theca, pollen sacs क्या है. Because these are going to give rise to, let me erase this.
microspores. Thus, they are the microsporangium. Clear? Now, these microsporangium are in the form of thala या sacs. Thala जैसा है. So, aka, also known as theca. Okay. But यही वाले अभी क्या करेंगे? They'll give rise to microspore mother cells. This microsporangium, will give rise to microspore mother cell. Microspore mother cell से microspores, और microspores को ही pollen grains बोला जाता है, right? Let me erase. Okay? So when this theca contains only the microspores, it is called microsporangium या theca, and जैसे ही वो mature होके pollen grains बना देता है, then it becomes pollen. When pollen grains are formed, यानी divisions हो गए हैं, it is called pollen sac या pollen का थैला. अभी भी अगर confusion है तो I'm going to give you a very silly example. You go to the market. आप market गए, आपने एक थैला लिया, you have taken a theca, let's say, and you bought some eggs. Okay? तो वो क्या है? That is a theca या that is a microsporangium. Clear है? You reach home. By the time you reach home, वो सारे के सारे अंडे अब हैच करके अंदर ही चिकन बन गए हैं. थैला वही है. But when you started, you had a bag full of eggs. But when you reach home, आप घर पहुंचे तो वो थैला अब क्या हो गया? चिकन्स का थैला हो गया, छोटे छोटे चिकन्स. Now you have a sack full of chickens. So sack full of pollen grains. That is why pollen sac. So pollen sac is the matured theca. Microsporangium is the immature theca. Clear है? तो इसके बाद हम ये इसका ट्रांसफर सेक्शन को डिटेल्स में देखने वाले हैं. So by now, I guess many of you have answered what kind of a flower is this. So let's see. ये ओवरी है, एंथर का पोजीशन, पेटल्स का पोजीशन सारा का सारा इसके ऊपर है. तो which means what? Ovary is inferior. तो फ्लावर क्या होगा? उसके ऊपर बैठा हुआ है. So flower is epigynous. This is a epigynous flower. Clear? So look at the diagram. Always look at the position of each hole with reference to कि ये ovary के ऊपर है या ovary के नीचे, and it will be very easy for you to see. तो let me wipe this and let's look at the transverse section of an anther. तो अब this is the transverse section of an anther. Let us look at this part. उसका structure वहां बना हुआ है. Okay? So let's begin from outside to inside. The outermost layer is always epidermis, right? Single layered. Okay. Next to it, second one is endothecium. Clear? And after that, do you see the small cells? 1, 2, 3. ये वाले. These are middle layers. This is also single layer, right? One, two, three layered. These three layers, they do the job of protection. What is their function? Protection. Who do they protect? किसको protect करते हैं? The microsporangia. Yeah, right?
Then do you see this one? This single layered cell, single layered cells is called tapetum. मैंने इसका थोड़ा डेंस साइटोप्लाज्म ऐसे दिखा देती हूँ. And कुछ multinucleate भी. This is just for your reference so that you can keep it in mind. The cells have, this is also single layered. Cells have dense cytoplasm. And multinucleate. Now in your book there is a line given, how do you think the tapetal cells become multinucleate? कैसे होता है, कैसे होगा? Karyokinesis के बाद cytokinesis नहीं होता, right? तभी तो multinucleate होगा. And tapetum is a very important layer. It has many functions. Let's look at their function. First is to nourish the microsporangia. Okay. Second, to secrete Ubish granule. Yeah, to secrete Ubish granules containing sporopollenin and pollen kit. ये भी इनका function है. Sporopollenin अभी हम पढ़ने वाले हैं. They are the substance which makes the exine. Okay, and pollen kit. In insect pollinated plants, pollens have a dusting. एक ऊपर से sticky layer होता है, sticky substance होता है which help them in sticking to the animals. That is called pollen kit. Okay. Then they secrete proteins. They secrete compatibility protein. अब जैसे फ्लावर्स तो सारे के सारे खुले में है, राइट? दिस इज द स्टिग्मा ऑफ अ रोज प्लांट. पास ही में एंड एक सनफ्लावर है. ओके, अब भंवरा सनफ्लावर से जाके रोज प्लांट में बैठ गया. उसको तो ये नहीं मालूम कि सनफ्लावर के बाद मुझे सनफ्लावर में ही जाना है, राइट? फिर शायद वो सनफ्लावर में जाए. तो तब क्या होगा? सनफ्लावर का पोलन एंड रोज का स्टिग्मा से हर रोज नया नया प्लांट बन जाएगा अपने आप से? ऐसा नहीं होता, राइट? सो वहीं पे कंपैटिबिलिटी प्रोटीन आता है. द पोलन आल्सो डिसाइड्स वेदर आई एम गोइंग टू मेक अ ट्यूब हियर और नॉट. ओके, टू सीक्रेट कंपैटिबिलिटी प्रोटीन. To secrete hormones like IA. Clear? Oh yes, and very important, to secrete enzyme Calase. This is also important. इसके बारे में हम भी पढ़ेंगे. Okay. Then next to it, ये सारे के सारे they are showing what? The sporogenous tissue. Right? मैं कहाँ पे लिखूँ? Sporogenous tissue. It's a homogeneous layer. क्लियर है? तो इससे क्या पता चलता है कि the anther wall is 4 layered. What are the 4 layers from outside to inside? Tapetum है, sorry, epidermis है, epidermis, endothecium, middle layers and tapetum. उसके अंदर है the pollen sacs या the microsporangium. Clear? Now they are the microspore mother cells and these cells are all diploid now. अब इन पे division होने वाला है. They are going to form the microspores or the pollen. Okay, let me erase this. तो अब देखते हैं microsporogenesis. Microsporogenesis means what? Formation of pollen grains या formation of microspores. Okay, या microspores.
सो व्हाट इज द बेसिक फ्लो चार्ट या फ्लो? माइक्रोस्पोरेंजियम, ये पूरा टिश्यू है, दे डिवाइड एंड देन दे फर्स्ट उनमें माइटोटिकली दे डिवाइड टू गिव राइज टू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है एंड दे गिव राइज टू माइक्रोस्पोर्स. So one microspore mother cell gives rise to 4 microspores. 1, 2, 3, 4. 4 microspores and they are held together. ये सारे पहले एक साथ रहते हैं. Okay, that is why they are called tetrad. These are the 4 microspores. ये alleles है. तो tapetum secretes the enzyme to dissolve this. Okay. जैसे ये dissolve हो जाता है, they become independent. दिस टेट्राड ब्रेक्स और एक माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हम शुरू करते हैं. ओके, हाउ डज इट डेवलप? सो दिस इज द सेल. इसके बाहर दिस आर द एक्साइन. एक मिनट, यहां पे एक्साइन है, द आउटर लेयर सेल, फिर इंटाइन है. ओके, ये एक्साइन है, दिस इज द इंटाइन एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये सेल है. इट शोज इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, द अमाउंट ऑफ फूड रिजर्व इंक्रीजेस. ये न्यूक्लियस है, इट इज पुश्ड टुवर्ड्स एन एंड. देन एन एसिमेट्रिक डिवीजन होता है. एसिमेट्रिक डिवीजन होता है एंड दे कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज वैक्यूल. दे पुश इट. दिस इज, इसीलिए आपके बुक में भी है एसिमेट्रिकल स्पिंडल. यूजुअली सेल डिवीजन में क्या होता है? द क्रोमैटिन्स आर हियर एट द सेंटर, ए स्पिंडल बिल्कुल अपोजिट पोल्स से खींचते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस? द डिवीजन इज अनइक्वल. तो एक बड़ा सा सेल बनता है विच इज द वेजिटेटिव सेल. अब वेजिटेटिव सेल मतलब क्या? इसमें खाना पीना काफी ज्यादा होगा. सो दिस इज द लार्ज सेल, prominent nucleus, food reserves बहुत हाई है. Then there is another cell called generative cell. This is spindle shaped. Small and floats in the cytoplasm of vegetative cell. क्लियर है? नाउ यहां पे दिस इज द एक्साइन. मैं यहां पे कर देती हूँ द आउटर मोस्ट कोटिंग. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ मैच्योर्ड पोलन ग्रेन. अब हम इनके सेल वॉल्स को भी देख लेते हैं. दिस इज नॉट रिटन एंड डिस्क्राइब्ड, बट ये सीक्वेंस आपके डायग्राम पे दिया हुआ है. डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग. ओके, कि आफ्टर अ टेट्राड इज ब्रोकन हाउ डज अ माइक्रोस्पोर डेवलप. ये तो पोलन ग्रेन यहीं पे बन चुका है. दिस इज 1 माइक्रोस्पोर स्लैश पोलन ग्रेन. ये सारा मैच्योरेशन प्रोसेस है. Okay, this is how it matures. Clear? Now, pollen grain के cell wall is 2-layered. First, outermost is called exine, and it is made up of the substance sporopollenin. This is one of the toughest and the hardest substance known to mankind. Why? Because it shows resistance to high temperature, acidity, alkalinity. Not destroyed by any enzyme. Okay? पर ये एक्साइन जो है इट इज नॉट कंटिन्यूअस. इन सम प्लेसेस दे लीव पोर्स. ओके, जैसे यहाँ पे दीज आर कॉल्ड व्हाट?
मैं कहाँ लिखूं, germ pores. No sporopollen present. यहाँ पे sporopollenin नहीं होता. As a result, the pollen tube will go out from these pores, germ pores. Okay. Then the inner layer, this one. अब इसका काम हो चुका है. Do you see this one? This is the intine. This is the inner layer. It is made up of cellulose and pectin. Clear? And then this is the membrane. Now for 60% of the pollen grains in angiosperms are shed at this 2-cell stage. 60% of, now let me erase this, okay? Here in 40%, 3-celled. This is the generative cell, right? अब यही वाला, and this is the vegetative cell. This is the VC, this is the GC. ये vegetative cell is going to form the pollen tube. And the generative cell, it moves here and it undergoes mitosis to form 2 non-motile gametes. ये यहाँ पे जाता है, they form 2 non-motile. Okay, it has moved. Clear है? So who forms the pollen tube? The vegetative cell. This is the VC, forms the pollen tube. These are the 2 non-motile gametes. Who is forming the non-motile gametes? The generative cell. Generate करना काम है उसका. Okay? Now, because pollen grain is the final structure to contain the male gametes, that is why pollen grain is the male gametophyte of angiosperms. Okay? Pollen grains contain the male gametes that is why they are called, they represent, that is why they represent. Clear? So far is entire process of microgenesis, formation of pollen grain, what is the male gametophyte, what is the microsporangium, microspore mother cells, is everything clear? Now, ये तो हो गया pollen. Now its main function is to go and pollinate and fertilize a egg. But to humankinds, मतलब for humans, pollen के good and bad effects दोनों ही हैं. They are very nutritious and they may also cause things like allergy. So let's write here. तो अब pollen का ill and good effects दोनों देख लेते हैं. Ill effects में क्या? They cause allergy. They also cause bronchial allergy, which is called hay fever, rhinitis means runny nose, asthma, etc. Clear है?
वन ऑफ द एग्जाम्पल गिवन इन योर बुक, आपकी किताब में है पार्थेनियम. पार्थेनियम इज द साइंटिफिक नेम. कैरेट ग्रास कॉमनली कहा जाता है. वो इंडिया में आया था along with the imported wheat. Okay, and it is known to cause allergy. Good effects में क्या है? Pollens are very rich in nutrients, and that is why they are taken as food supplements, tablets, syrups. Okay, they are claimed to increase performance of athletes and race horses. Now, pollen viability. So what is pollen viability? Viable मतलब क्या कि एक चीज कब तक जिंदा है, right? How long this pollen has the capacity to fertilize an egg. Now that period varies. In some of the plants वो बहुत ही कम होगा, it will be very short, and in some it may be long. Like two types of examples are given. Short in cereals like rice, wheat. Okay, Poaceae family का. Long up to months in families like Leguminosae, Rosaceae and Solanaceae. What are the conditions that affect the viability of pollen? Two conditions mainly, temperature and humidity. That is why अगर for hybridization program या for preservation, if you want to store the pollen, जैसे sperm bank होता है वैसे pollen banks भी है. So pollen banks में क्या, the pollen grains are stored in liquid nitrogen at -196 degree centigrade for years, and when required they can be taken out and used for various hybrid programs. Clear? So let's have a very quick recap of pollen grains. Pollen grains are what? The cell wall has two layers. Outer one is exine, made up of sporopollenin. Sporopollenin is one of the hardest substance known to man. Why? Because it shows very high resistance to temperature, acidity and alkalinity. And it is the sporopollenin for which pollens are fossilized. Okay? Is the sporopollenin complete? No. At places it leaves pores. Pores छोड़ जाते हैं, which are called germ pores. क्यों? For the pollen tube to come out. The inner layer is called intine. Intine is made up of what? Cellulose and pectin. Okay? उसके बाद the cell. The cell उसके the plasma membrane होता है. और यही cell divide होके gives rise to one large cell called vegetative cell, which contains all the food reserves and forms the pollen tube. तो vegetative cell का क्या क्या function है? It has the food reserve material and forms the pollen tube. Generative cell is small, irregular shaped nucleus, and it divides mitotically to form the two non-motile male gametes. Clear है? Pollen has got both good and bad effects. Good में क्या है? It's nourishes. It is rich in nourishment. Ill में allergy. And pollen viability, it varies from species to species. It is mainly dependent on two factors, temperature and humidity. Clear? So with this we are done with all the aspects of pollen जो आपके syllabus में है. That is given in your syllabus. Clear? Now और कुछ बाकी है? No. Pollen का हो गया. Yes. Because the male gametes in angiosperms are non-motile, that is why they need pollinators, right? उनको हटाना पड़ेगा. But in lower plants like algae, bryophytes, they needed a film of water to swim. They had their own flagella. They were motile. Okay? So इसके बाद है female reproductive hole, which is the megasporangium. Okay? Microsporangium या male reproductive hole के बाद हम female पे आते हैं. Okay? So here are couple of images. ये आपके syllabus का ही है. So ये क्या है? This is the diagram of a carpel of a hibiscus. ये सारे स्टिग्मा है. This is the style and this is the ovary, right? फिर ये क्या? This is the multicarpellary. Syncarpus.
Syncarpus means what? Multicarpally, the carpels are fused, right? That is why syn. Carpels fused of papaver. Papaver. So many. So these are the stigma here. And this is the ovary. Okay. और ये क्या है? This is ये भी multicarpellary है, but this is apocarpus. Apocarpus means what? There the carpels are free. These are the carpels. These are the carpels, right? What is this? Multicarpellary. मतलब more than one carpel. Apocarpus. Apocarpus means what? Free carpels. Okay. Now, carpels free ho, fused ho, single ho, या multiple ho. Let us look at one. Basic तो एक ही है, right? So this is the stigma, style, ovary, ovule. इसी ओव्यूल के अंदर द मेगास्पोरेंजियम या द मेगास्पोरोजेनस टिश्यूज आर देयर. दैट इज व्हाई ओव्यूल्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज द मेगास्पोरेंजियम. क्लियर है? Now let us look at the structure of one ovule in details. So this is the diagram of a ovule. ये क्या है? द ओव्यूल जो है, नाउ वन थिंग, दिस इज द ओवरी, राइट? उसमें ये यहाँ पे प्लेसेंटा लगा हुआ होता है, बिकॉज ओव्यूल्स, और लेट मी मेक अ ट्रांसफर सेक्शन. यू हैव रेड अबाउट प्लेसेंटेशन ऑलरेडी, राइट? Placenta. Okay, the ovules are always attached to what? Placenta, and placenta is attached to the walls of the ovary. Ovules are never directly attached. Please write it down. तो attachment जिस part से होता है, that is called funicle. What is funicle? This attaches ovule to the placenta, or then the body of the ovule, it gets fused, right? So that part is called hilum. Hilum is where at the point of attachment, ये तो stalk हो गया, right? जहाँ पे point, the body of ovule fuses with funicle. Clear? फिर these are the integuments, outer covering. ये integument, ये covering जो है, it is not complete. It always leaves a opening, and this opening is called the micropyle. Okay. फिर this is the nucellus, and this is the embryo sac. So integuments are the hard covering, ये micropyle है. It is the opening through which the pollen tube inserts, and this end is called the micropylar end. यहाँ पे नहीं, this end. Ovule. और उसके बिल्कुल opposite में this is called the callosal end.
क्लियर है? नाउ न्यूसेलस क्या है? न्यूसेलस इज अ होमोजेनस लेयर ऑफ टिश्यू. यहीं से ये पूरा सेल्यूलर स्ट्रक्चर है. वन सेल differentiates as megaspore mother cell. This megaspore mother cell gives rise to 4 megaspores. 3 perish. ये तो स्टैंडर्ड फ्लो है हर मोस्ट ऑफ द फीमेल्स का, राइट? 1 survives. This is the functional megaspore. Functional megaspore forms the embryo sac. और इसी embryo sac के अंदर egg होता है. Clear? Now, because embryo sac is the structure which directly contains the egg or the female gamete, that is why embryo sac is referred to as the female gametophyte. Clear hai? Let me write it here for you. Since embryo sac contains the egg, which is the female gametophyte, so it is the female gamete, which is the female gamete. I'm sorry. Since embryo sac contains the egg, which is the female gamete, so it is the female gametophyte. Clear hai? So this thing is the megasporangium. उसमें से न्यूसेलस में से one cell differentiates. This is the which forms the megaspore mother cell. उसमें से 4 megaspores. यहाँ पे meiosis होता है, you all know, but फिर भी you are very smart students. ऐसा नहीं कि you don't know, but रिवाइज हमेशा करते रहना चाहिए, राइट? बिकॉज छोटे मोटे चीज ही स्लिप हो जाते हैं माइंड से. 4 megaspores of which 3 perish, 1 remains. That is the functional megaspore. It forms the sac. sac मतलब क्या? फिर से थैला, और इसी थैले के अंदर अंडा. तो थैले के अंदर अंडा, biologically that is the female gametophyte. Easy. Now let us look into the how the female gametophyte is formed. Okay. So now let's look at the structure, at the how the megasporogenesis. Okay. Embryo sac कैसे हो रहा है? So ये nucellus है. Okay. There are other cells. पूरा nucellus में से one cell at the micropylar end differentiates to form the megaspore mother cell. Okay. तो यहाँ पे लिख दो one cell at to form megaspore mother cell. Clear है? तो it undergoes meiosis. So this is the megaspore dyad, first part of the meiosis. यहाँ पे megaspore tetrad means the meiosis is complete. तो यहाँ पे what was the ploidy? It was twice n. यहाँ पे it is n. यहाँ पे also n, 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 n. Nucellus का it is twice n, right? Nucellus का twice n. Clear है? Out of this 4, only 1 survives. The rest 3 perishes. बाकी 3 perish हो जाते हैं, एक ही survive करता है. Now ये है उस एक सेल का स्ट्रक्चर. इसका प्लॉइडी n है.
तो इसमें एक न्यूक्लियस था, इट अंडरगोस माइटोटिक डिवीजन। यहां से शुरू होते ऑल डिविजन्स आर माइटोटिक। सो बेसिक थिंग इज मियोसिस होके जैसे ही कोई रिप्रोडक्टिव स्पोर या बॉडी बन जाता था, फाइनल वन द गैमेट, ओके, उसके बाद अगर उसमें से डिवीजन होना है उस गैमेट में, तो वो माइटोसिस होना है, बिकॉज प्लॉइडी हैज कम डाउन टू एन। इसके बाद उसको फर्दर 1/4 ऑफ एन नहीं कर पाएगा, राइट? ट्वाइस एन एंड फिर n/2, ऐसा नहीं होता, n को n ही रखना है। सो द ऑल द डिविजन्स आफ्टर दैट विल बी n, आई मीन माइटोसिस। क्लियर? तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, one cell, 2 nuclei. Second mitotic division, one cell, 4 nuclei. Third mitotic division, one cell, 8 nuclei. Right? Up तक, so 3 mitotic divisions occur in the functional megaspore. So 3 okay, then the cell wall formation begins. इसके बाद से it will start becoming cellular or it will become cellular. तो this was the micropylar end, right? हम इसको micropylar end ही इस तरफ को मान के चलेंगे ना, कुछ नहीं। अगर हम इसको ऐसा रखते तो ये micropylar end है तो है, अगर इसको घुमा दे तो ये micropylar end हो गया, right? तो वो डायग्राम पे आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। Why am I telling this? Because in your diagram जो सिलेबस पे है ऊपर के तरफ इस वाले डायग्राम में माइक्रोपाइलर देते हैं, एंड देन बट व्हेन दे आर शोइंग द फाइनल डायग्राम उन्होंने उल्टा कर दिया, उन्होंने इसको कैलेजल दिखाया है एंड जस्ट ओरिएंटेशन उल्टा किया है। ओके, बट आई एम नॉट डूइंग दैट, मैं इसका ओरिएंटेशन वैसा ही रख रही हूँ, माइक्रोपाइलर ऊपर की तरफ ही रख रही हूँ। क्लियर है? नाउ इट हैज बिकम 1 cell, 2 cell, 3 cell, 4 cell, 5 cell, 6 and 7 cell। यहां पे मैं लिख देती हूँ सेल वॉल फॉर्मेशन बिगिंस। नाउ इट इज 7 celled। हाउ मेनी न्यूक्लियाई? इन सब में 6 1 न्यूक्लियस है, इसमें 2, सो 8 न्यूक्लिएट। क्लियर? नाउ लेट अस लुक एट दिस। दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। ये और ये है सिनर्जिड्स। And these are fat depositions which are called filiform apparatus. This is the egg. Clear? Now these 3 things, मैं filiform को भी इस तरफ लिखती हूँ। This is the filiform apparatus. They 3 form the egg apparatus. Clear? Filiform का function क्या है? They guide the pollen tube. Clear? इट्स लाइक आप जैसे किसी गली में जाते हैं तो एरो मार्क दिया रहता है, राइट? तो यहाँ पे भी द फैट और द थिकनिंग, सॉरी नॉट फैट, थिकनिंग वाला स्ट्रक्चर से इट कैन फील कि दिस इज द वे आई हैव टू गो, दिस इज द वे आई हैव टू गो। क्लियर है?
And now from there, let's come to the callosal end. And now from there, let's straightway come to the callosal end. Okay. Callosal end में भी 3 cells है. What are these called? These 3 are called antipodals. Okay. Beach में do you see this large cell? This is one large cell called central cell, and these 2 are called the polar nuclei. Right? Thus 3 cells, 1 cell, 7 cell, 8 nucleate. Clear? This is the micropylar side. So synergids का job क्या है? They and the filiform apparatus, they guide the pollen tube to the egg. Synergids, they also get some nourishment from the nucellus for the egg. Clear है? And antipodals वो बाद में they also perish वो after fertilization. तो इसके बाद है pollination. So I hope all the things are clear. So we are done with the female reproductive part of the flower also. Now pollination. Okay. So अब क्या? अब pollination. Right? So what is pollination? You all know, आप सबको मालूम है, लेकिन फिर भी one just small line. Right? Transfer of pollen grains from anther to stigma. Now, pollination के भी बहुत सारे से तरीके. Pollination is of 3 different types when you are looking at it from the source of pollination. Source of pollination means what? It refers to the source of pollen grains. Right? So depending on the source of pollination, pollination can be of 3 types. Autogamy, geitonogamy, and xenogamy. Right? So now let's look at one of them, each one of them in details. So first one is what? Autogamy, right? Auto मतलब क्या? Self. कुछ तो self वाली बात है इसमें. So pollen and stigma of same flower. Right? तो ये कहाँ देखने को मिलता है और क्या है ये? See, when a bisexual flower is open, इसमें से these are the stamens and this is the ovary, right? Merely एक bisexual flower के open हो जाने से ही it does not mean या it does not ensure कि उसमें autogamy होने वाला है. Why so? Because the maturity time of this stigma and dehiscence of anther has to synchronize. So what is the condition for autogamy which will ensure synchronization? So synchronization of anther dehiscence and stigma receptivity ensures autogamy.
गैमी, राइट। अब ऑटोगैमी में जब पोलन और द ओव्यूल्स ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट हो गया, तो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। सो इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? तो ऑटोगैमी जिन फ्लावर्स में दिखाया जा ensured है, there are some examples you would get to see in examples in viola, which is common pansy, Comelina. They produce to ensure autogamy. They produce two types of flowers, right? Chasmogamous, Clastogamous. These are regular flower which opens. Okay, these flowers never open. As a result क्या होता है? The stigma and the anther they are enclosed. बाहर से किसी पोलन के आने का चांसेस नहीं है, and the receptivity of the stigma and the dehiscence of the anther, जब वो anther फट के अपने पोलन्स को डिस्पर्स करने वाला है and the stigma is receptive, वो भी synchronized हो जाता है, right? This ensures complete, incomplete तो कुछ होता नहीं, just this ensures autogamy. क्लियर है? अब क्लेस्टोगैमस फ्लावर के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस दोनों ही हैं. Why? Because, or you can say autogamy के, either way it is the same thing. Advantages क्या? This ensures seed formation even in absence of pollinators. तो इसको तो कोई चाहिए ही नहीं. Not dependent on pollinators, right? Okay. Disadvantage what? जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आ सकता, बिकॉज वो हर बार सेल्फ हो रहा है, मतलब इनब्रीडिंग ही हो रहा है, राइट? नो जेनेटिक clear? So so this is a kind of self pollination which is not dependent on any pollinators. No, you cannot really say that. Only clastogamous flowers होगा, because यहाँ पे open flower में भी हो सकता है. So अगर कोई पूछे कि क्या open flower में autogamy, बिल्कुल नहीं हो सकता है, but the thing has to be synchronized. कहने का मतलब ये है कि just flower के open होने से ही दोनों में maturity या receptivity synchronized नहीं होता, आगे पीछे हो सकता है. Clear है? So these are the three examples of the flower. Clastogamous is very important. Advantages, disadvantages हो गया, and it is a kind of self-pollination. Now let us move to the second one. Geitonogamy. Different flowers, same plant. तो genetic variation क्या इसमें भी आने वाला है? Technically, no. I mean not technically, actually no.
तो it is also a type of self pollination. क्या इसमें does it have to depend on pollinators? Yes, dependent on pollinators, right? So इसीलिए there is a line written in your book, functionally it is functionally cross pollination. But in reality, it is self-pollination, right? No genetic variation here either. Now, I have a thing, like this is a plant. इसमें bisexual flowers है. And this is a plant which has unisexual flowers. तो geitonogamy दोनों में ही हो सकता है, right? Is that clear? Now let us go to the third type, which is xenogamy. Sorry. Pollen, ovule, different plants, right? या फिर you can say flowers of different plants. तो ये क्या हो गया? ये functionally as well as in reality this is a true cross pollination. क्या इसको पॉलिनेटर्स की जरूरत है? ऑफ कोर्स है. Produces genetically variable seeds. क्लियर? अब हम तीनों का एक कंपैरेटिव टेबल देख लेते हैं. सो ऑटोगेमी, गैटिनोगेमी एंड जीनोगेमी, ये दोनों आर सेल्फ पॉलिनेशन एंड दैट वन इज अ क्रॉस पॉलिनेशन. Pollination within the same flower, pollination within same plant, pollination involving different plants, right? Of same species. ये भी लिख दो. Although you all know same species. Some members produce two types of flowers. मैंने लिखा single type of flower is produced, single type of flower is produced. Actually single type of flower means bisexual या unisexual पे अगर जाए तो no. I think I need to modify this. Chasmogamous and Clastogamous, ऐसा कुछ नहीं होता. That will be more technically correct, right? इसको यहाँ पे Chasmogamous and Clastogamous. Flowers produced. Why am I saying that? Because अब यहाँ पे unisexual flowers भी तो हो सकते थे. Unisexual flower तो different type वैसे हो गया. If you are looking at it from the point of sexuality, right? So ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं होता. So just put blank lines here. Clear है? Seed production ensured, not ensured, not ensured. No genetic variability, no genetic variability, genetic variability यहाँ पे होता है. Pollinators not required,
रिक्वायर्ड एंड रिक्वायर्ड. ओके, तो इसके बाद देखते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, there are two, it can be broadly classified into two types. Abiotic मतलब नॉन लिविंग एंड बायोटिक. यहाँ पे ग्रेटर साइन इस तरफ दिया हुआ है बिकॉज मोर स्पीशीज और मोर प्लांट्स हैव डिपेंड ऑन बायोटिक pollinators. Okay, so more common. Okay, first let's see abiotic. Abiotic में water and wind. So this is also here more common. This is less, only about 30 species of monocotyledons. Monocots show water pollination. Right? Now let us look differences भी देखते जाएंगे और एक साथ पढ़ते भी जाएंगे. Okay? यहाँ पे just add one mostly. Okay? Now wind और water के flowers के कुछ कुछ अलग features होते हैं. Let's begin with the pollen. अब pollen यहाँ पे क्या होना है? It is exposed to water, so it has to have something to cover it. Sorry, to prevent it from water. तो pollens with mucilaginous covering. यहाँ पे pollens are very lightweight, non-sticky, क्योंकि उनको तो उड़ना है, right? They have to be blown away in the wind. Now यहाँ का यही तक फ्लावर का स्पेशलाइजेशन है. यहाँ के फ्लावर्स में और कुछ स्पेशलिटी है, लाइक flowers are small, arranged in inflorescence. Stamens are light and well exposed to disperse the pollen. लाइक ये अगर फ्लावर है तो उससे पतले पतले निकले, जितना निकला हुआ होगा दे विल बी मोर एक्सपोज टू द एयर. जितना एक्सपोजर टू द एयर होगा डिस्पर्शन विल बी इजियर फॉर देम, राइट? एंड स्टिग्मास आर आल्सो फेदरी टू ट्रैप द पोलेंस इन एयर. अब फेदरी कुछ स्ट्रक्चर होगा तभी तो हवा पे जो भी जा रहा है इट विल बी इजी फॉर इट टू ट्रैप, राइट? सेकेंडली यहाँ के ईच ओनली सिंगल ओव्यूल होता है, वन ओव्यूल, वन पर ओवरी. क्लियर है? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स. और यहाँ के फीचर में यही है कि द पोलन ग्रेन्स आर गोइंग टू हैव a mucilage, a covering of mucilage. क्लियर है? Now इसमें पहले हम water का देखते हैं. One thing about water is just because a plant is growing in water does not ensure that it is water pollinated. Water hyacinth, water lily ये होते पानी में है, but they either depend on insects या they depend on wind for pollination. Please make it clear, okay? ग्रोइंग इन वाटर, यहाँ पे लिख देती हूँ एक्वेटिक प्लांट्स डज नॉट नेसेसरीली मीन वाटर पॉलिनेटेड. ओके, नाउ लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स हियर. फ्रेश वाटर पे दो है, वन इज हाइड्रीला वेलिस्नेरिया, मराइन में
जूस्टेरा। क्लियर? अब वेलिस्नेरा का यहां देखते हैं। Now you all are done with these points, so let me erase so that I explain these two examples clearly. Okay, you can just take a screenshot of this part. तो इनके एग्जाम्पल्स को हम डिटेल्स पे देखते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे से क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं। वाटर में फ्रेश वाटर का वेलिस्नेरिया एज एक्सप्लेन्ड। फ्लावर्स इन तीनों में यूनिसेक्सुअल है। ओके, फीमेल फ्लावर्स दे आर विथ लॉन्ग स्टॉक रीच द वाटर। ये वाटर सरफेस है। ओके, बिल्कुल पानी के सरफेस सतह तक ये जाता है। लॉन्ग स्टॉक। ओके, दिस इज द फ्लावर, दिस इज द स्टॉक, फ्लावर स्टॉक। ओके, एंड दिस इज द फ्लावर। ये रहा स्टॉक, दिस इज द फ्लावर। क्लियर है? और मेल फ्लावर्स क्या? स्मॉल। दीज आर द मेल फ्लावर्स। दिस डायग्राम इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक। ये यहाँ पे what you have to take note of is कि it's not that the pollen grains are dispersed, पूरा का पूरा छोटा छोटा male flowers are dispersed. अब वो जब water current carries them to the female part, reproductive part, the pollen grains also get dispersed that way. Clear है? That is why it's very important. Remember, male flowers small, male flowers are released. Male flowers, okay, released on the surface, carried to the stigma by water current. ये हो गया। नाउ लेट अस गो टू जूस्टेरा। दिस इज अ मराइन वन। यहाँ पे भी फ्लावर्स है यूनिसेक्सुअल, यहाँ पे उल्टा है। द फ्लावर्स आर सबमर्ज्ड, हियर द मेल फ्लावर्स आर नॉट रिलीज्ड, हियर ओनली द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड। मार्क दिस डिफरेंस। ओके, रिलीज्ड इनसाइड द वाटर, कैरिड पैसिवली बाय करंट। यही अगर लोअर फॉर्म्स में होता लाइक ब्रायोफाइट्स और एल्गी, द एंथेरिस वर्ड्स दे स्विम बिकॉज दे आर मोटाइल। एंजियोस्पर्म्स में दे आर नॉट मोटाइल, एंड दैट इज why this whole pollinator thing, right? फिर wind में one of the example given in your book is they have written about corn. corn में क्या? male में stamens are called tassels. This is the rough diagram of a corn plant. यहाँ पे flowers are unisexual but on the same plant. Remember, तो ये ऊपर के तरफ male flowers होते हैं। This black thing is the inflorescence और ये stigma, sorry, stamens यूं निकले हुए हैं, and these are the tassels. ये कॉर्न है, this is the female flower. ऊपर की तरफ जो ये सिल्क है, these are the stigma. Clear? ये exposed part helps them in dispersing the pollen, and this silk feathery thing, it helps in trapping. And but the diagram that is given in your book is not that of a corn. वो just in general एक wind pollinated flower का दिया हुआ है, because उसका जो पत्ता है ना, it does not look like corn का पत्ता, यूं नीचे फ्लैट सा है। Anyways, तो उसी का ही एक रफ कॉपी बनाई हूं। This is the male flower, and do you see the stamens are well exposed? Clear है? So with this we are done with the abiotic thing. अब इनके डिफरेंस देख लिए, but what is common in the flowers which have abiotic pollinators? They do not produce very beautiful, colorful, fragrant flowers. Okay, common to it. So do not produce colorful, fragrant nectar flower. Clear? Because उन चीजों की यहाँ जरूरत नहीं है. Now let us move on to the biotic part. So majority of the species are biotic, depend on biotic pollinators, right? उसमें से भी insects, most of them are insects. That is why insects के लिए मैंने greater sign दे दिया है. Then other animals like lemurs, bat, gecko, garden lizards, etc. Rodents भी है. So anyone which is living in close vicinity of the plant and visiting the flower, right? Insects में भी सब majority of them depend on bees. Bees का ज़्यादा है than other insects, right? Than other insects. Now, one of the common characteristic of flowers which are pollinated by
इंसेक्ट्स की दे आर फ्रेग्रेंट, कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, द फ्लावर्स विच आर pollinated by flies and beetles, they produce a fall odor, वो फ्रेग्रेंट नहीं होते, ओके, बिकॉज फॉल ऑर्डर ही खराब सा स्मेल ही फ्लाइज को अट्रैक्ट करता है। There are two special examples given. One is the flower of Amorphophallus. वो flower ही is almost 6 feet tall and it provides shelter to the insects to lay eggs. इसी तरह से वो lay egg करता है, in that process it pollinates also as it goes in. And another one is yucca. Yucca, it allows the moth to lay egg in the locules of the ovary. So when it is entering, it is pollinating the flower entering. और जैसे the seed starts forming, the larva come out. Larva come out as seeds begin to form. So they cannot, both life cycles are connected. हो गया। नाउ हम देखते हैं अब पॉलिनेशन हो जाने के बाद क्या होता है। सबसे पहले तो ये है कि ये जैसे एक भंवरा है, उसको तो ये नहीं मालूम कि मैंने रोज पे बैठा है, आई हैव, तो मुझे नेक्स्ट भी एक रोज पे ही जाके बैठना पड़ेगा। जैसे रोज, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, किसी पे भी वो बैठ सकता है, राइट। तो इसी तरह से अगर हर जगह पॉलिनेशन होने लगा, क्रॉस पॉलिनेशन हर रोज हमें देखने को मिलेगा, आई मीन हर रोज नए नए स्पीशीज निकल आएंगे। सो दैट इज हाउ वेयर पॉलिनेशन के बाद भी एक रह जाता है, एक देयर हैज टू बी अ चेक पोस्ट कि ये वाला पोलन ग्रेन कंपैटिबल है या नहीं है टू फर्टिलाइज दिस ओवरी या ओव्यूल। उसको बोलते हैं पोलन एंड पिस्टिल इंटरैक्शन। मैं पोलन और पिस्टिल इंटरैक्शन में जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बात बोलना भूल गई थी, सो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट दैट। आउटब्रीडिंग डिवाइस, तो वी हैड रेड अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन अभी अभी, राइट, वी जस्ट रेड। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ओवर द जनरेशंस होते होते इट लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, उनमें कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी होता नहीं है, राइट। सो दैट इज व्हाई एज प्लांट्स इवॉल्व्ड दे इवॉल्व डिफरेंट मैकेनिज्म टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। तो वही एंड उसके लिए क्या, व्हाट डिड दे डू, दे ट्राइड टू मेक मेनी डिवाइसेस which we can call outbreeding devices, which will promote breeding outside the same plant, right? So what are the different methods? First is pollen release and stigma, sorry, pollen release and stigma release नहीं होगा, stigma receptivity. So the first is pollen release and stigma receptivity is not synchronized. How? Either the anthers dehisce before the stigma becomes receptive or vice versa. Stigma becomes receptive before the anthers dehisce. Okay? दूसरा है stamens and carpels are at different positions. So कहीं पे stigma ऊपर, anthers नीचे, कहीं पे vice versa, anthers ऊपर, स्टिग्मा नीचे, clear? But these two, see, as the plants were evolving, वो धीरे धीरे evolve हो रहे थे. First they tried this, maybe then this, नहीं हुआ, then they tried something else. So these first two methods, they only prevent autogamy. Autogamy मतलब क्या? Within the same flower, okay? Geitonogamy दोनों में हो रहा है. Geitonogamy still on, clear है इन दोनों में. Third is genetic mechanism. This is one of the advanced mechanism, self incompatibility. तो उनमें in pollen and pistil interaction we will see there are some proteins which identify कि ये उसी मैं अपने ही प्लांट के फूल पे आके गिरा हूं,
Okay, that is when they release something which prevents the further development. Okay, self incompatible हो जाते हैं, and that is a genetic way. Fourth is unisexual flower. अब unisexual flower में भी the plants can be of two types, you know. Monoecious में क्या flowers are unisexual but plant तो same ही है, mono, right? इसमें it prevents autogamy because flowers are unisexual and different, तो autogamy हो नहीं सकता, but not geitonogamy. Geitonogamy चलते रहता है, पर उसके बाद plants को पता चला कि no, this is not the right, इससे भी पूरा हो नहीं रहा क्रॉस फर्टिलाइजेशन, राइट? तो मुझे क्या करना है? नाउ लेट मी सेपरेट द फ्लावर्स, यूनिसेक्स फ्लावर्स इन डिफरेंट प्लांट्स, यूनिसेक्स फ्लावर्स इन डिफरेंट प्लांट्स, दैट इज डायोएशियस, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड गेटोगैमी. क्लियर है? नाउ पोलन एंड पिस्टल इंटरैक्शन का देख लेते हैं. Pollination does not ensure that the stigma has received the right type of the pollen, right? So it is the job of the stigma to identify. अगर सही है तो give it a pass, अगर नहीं है तो उसको वहीं रोक लो. These thing is done by a series of chemical interactions between the pollen and the stigma, and that is called pollen and pistil interaction, right? कुछ भी नहीं. The stigma either rejects if wrong pollen or accepts if right pollen. And how this process takes place? Chemical interaction between pollen and the stigma part. वही compatibility वाले proteins interact करके देखते हैं आगे बढ़ना है कि नहीं. अगर stigma को पता चलता है कि this is the wrong type, it stops, it does not allow the growth of the pollen tube. Now, if everything is right, what happens? ये pollen है and this is the stigma, right? Pollen tube grows. Now remember, we had read कि in 60% of the angiosperms, 2-cell pollen grain is released. This is the time कि if compatible, टू सेल जो है, टू सेल पोलन, द कंटेंट मूव्स टू द पोलन ट्यूब नाउ, or the generative cell. Let me write the generative cell. Okay, and it divides to give the two gametes. So this is the pollen, this is the pollen tube and this is the stigma, right? So the generative cell has moved here. Now within the style it is dividing. Clear है? Two gametes. And in 3-cell जो है, 3-cell pollen grains, the gametes simply move to the pollen tube. क्योंकि डिवीजन तो ये पहले ही कर चुके हैं, टू द पोलन ट्यूब. Okay. Now this is all about natural pollination. अब we also do artificial hybridization, right? तो उसमें क्या होता है? See,
if the flower is unisexual, if the flower is bisexual, दोनों में ही you have to take certain steps. Okay, so let's see one by one. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम करते क्या हैं? वी मेक द क्रॉस बिटवीन अ डिजायरेबल पोलन एंड अ डिजायरेबल स्टिग्मा. वहां पे हम सिलेक्ट करते हैं कि इस वाले को इसी पोलन से पॉलिनेट करवाना है, राइट? सो हाउ डू वी अचीव इट फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स? फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, emasculation. Masculinity, mascule, इसी में है कि something to do with the male part. Emasculate, this means what? Cut the stamens. Why? Because उसको unisexual बनाना है. We want that stigma to get the pollen from the source that we want. तो इसीलिए इर्द गिर्द कोई भी दूसरा pollen रखना नहीं है. Stamens are cut. राइट वो तो हो गया. उसके बाद क्या? द सेकेंड थिंग इज बैगिंग. द फ्लावर इज बैग्ड आफ्टर इमेस्कुलेशन. इमेस्कुलेशन से पहले नहीं होगा. सुइटेबल बैग से उसको कवर कर दिया जाता. व्हाई? बिकॉज बाकी दूसरा कोई अनडिजायर्ड पोलन आके उस पर ना बैठे. फ्लावर्स आफ्टर इमेस्कुलेशन covered with bag to prevent undesirable pollen. क्लियर है? अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में वी डोंट नीड टू इमेस्कुलेट. व्हाई? बिकॉज वहां पे द फ्लावर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट. एक मेल है तो एक फीमेल है. जो फीमेल है उस फ्लावर में तो कोई स्टेमन्स नहीं है. जो स्टेमन्स है उसमें कोई पिस्टल है नहीं. सो ओनली बैगिंग इज रिक्वायर्ड. ओके, बैगिंग व्हाई? टू कवर द फ्लावर so that we can prevent the undesired pollen from depositing. So these are the two steps that is followed for pollinating in case of artificial hybridization. हो गया? We are done with everything. Compatibility, incompatibility, artificial hybridization हो तो क्या होगा, सब कुछ देख लिया. अब अगर सब कुछ सही बैठता है तो let's begin with the next journey. Okay? So how the pollination के बाद how the fertilization occurs, fertilization, double fertilization, seed formation, ये सब we will do it in the next part of this chapter or in the next video. Okay, so bye for now, and I'm going to see you again with the next part of this chapter.